Assalamu alaikum. I'm Zain Kazi, and you're watching Whine and Dine, and I am the guest of the show. The host with me is the wonderful Sumbul Said, Hi. and welcome to your own Thank show. How do you. you feel? It's like the first time I'm doing, so I'm very nervous. But thank you, Absolutely, everybody. absolutely. Yeah, But you're the host. You've always been the host of every been show. I mean, been if the anybody host for doesn't a know, while this now. is Zain Kazi, who has his own stand-up club, Laugh Out Lounge, which I think we started together initially. But Oh yeah, girl is uh, girl is. yes, but then I ditched him because I thought that there was no Hey, future to it. she was thinking he's not gonna make it. Okay, but Khair, Wine and Dine. How did you come up with this, and what's the whole concept? Yeah, the concept was that, well, you know me, I don't plan anything, Hmm. and nothing is like a goals or future or stuff. Whereas I plan everything. Yeah. Yeah, so we both improvise. Yeah. And one day I had a mental breakdown, Mhm. and which is normal for us. And when whining करी थी बहुत ज़्यादा, but I didn't really had anybody. Okay. And I was like, यार, और फिर I was having comfort food और फिर मैंने कहा ये तो हम रोज कर रही होती हूँ. I eat something and I'm whining with you or Yeah. another friend. तो चलो इसको public कर लेते हैं. क्या ही जाएगा? Let's make money out of it. I mean, I'm hoping it's more therapeutic Hmm. than famous वाला Yeah. जो भी scene है. Not that मैं होंगी, Hmm. हर किसी को पता है. Because I also thinking this is the first time और लोग जो podcast कर रहे थे उनकी पहली एक recognition होती है on social media and they have the influences or progress. But I want to keep this very low end myself as well, talking to normal people. Hmm. नॉर्मल लोग की जिंदगी में क्या हो रहा होता है जो हम मिलेनियल्स हैं हम जैसे सैड लोग Yeah. तो दैट वाज इट मैंने कहा दोस्त भी हैं जो मेरी तरह सैड हैं Hmm. और फ्री फूड एवरीबॉडी वुड वांट दैट Thank you so much. I love the coffee. so yeah it's wine and dine so we're dining as well the concept Yeah. but yeah that's the thing Okay. Perfect. So, absolutely. It's been how many years have we been friends? well I'm glad you're saying that we're friends but I think I got to know you in second year of LSE Yeah, second year. Yeah. second The year of first year LSE I thought you were a senior. I don't know why because सबको लगता है कि मैं तो बस ही छोटी सी young Maybe you've always had that uh, maturity about you. I don't know. I thought that was I thought that was my first No, impression. I remember you say you always have this thug walk जो पता नहीं कितने अरसे से इस हाँ university में पढ़ रही है हालांकि that was not the हाँ, case. you were like really comfortable. Like you were like it felt like that you've already settled into this place, whereas I was a little bit jittery when I first came in. Uh, Khair, I guess you, but that's not just me comfortable because I don't give a shit about recipe of anything. Never have. yeah. So that was the attitude. So I think that's the key to maturity. Don't give shit about things. Yes, And I that's think how you become mature. But suddenly we became adults and we started giving shit about stuff. have I'm thoda. like bachelor's में I know I remember you were this top student best CGPA हम लोग बहुत ज्यादा जी क्विजेज में हमने आगे और चीटिंग तो हमने करनी नहीं होती आई रिमेम्बर जब क्विजेज होते थे तो ऐसे करके टेबल पे बस पता नहीं जैसे कि क्या हो रहा है क्या मिला मुझे बताओ इतने एज लेके तुम्हें क्या मिला लाइक Okay. This is the first time here on Wine and Dine. I'm going to give full disclosure of why I did not used to let other people cheat. Okay, so I heard my my father was in the Air Force. ठीक है जी. So he was doing really great. तो मैंने सुना था and मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा था कि why did he left the Air Force? Why did he leave the Air Force? Because he was very comfortable. He used to talk about it. मैं अभी तक सोचता हूँ यार Air Force ने छोड़ दी all of a sudden. Turns out what happened was कि पापा का एग्जाम हो रहा था and पापा decided to help his fellow friend and he got caught. And from that time onwards, I made a rule to myself कि ठीक है before the
before the paper exam अपने जो भी मेरे से पूछना I will help you, I will even teach you. Remember we used to have those हाँ finance classes. मतलब आई थिंक मैंने इंस्ट्रक्टर से ज्यादा तुमसे पढ़ा है हाँ Saturdays में। तो यही इसी तरह से तो that's why I had that one rule क्योंकि फिर ये होता था कि देखो और दूसरा ये था कि since मैंने कभी चीटिंग कराई नहीं थी तो मैं चीटिंग करवाने में इतना अच्छा भी नहीं था कोई बंदा पूछता भी था तो कोई प्रो नहीं होता चीटिंग करने में मतलब इट्स जस्ट डूड एलएससी में हाँ एलएससी में कुछ एलएससी होते में थे अगर आप देखो तो बंदा कहता है कि वाह आई थिंक सब चीटिंग करके ही पास होते थे मोबाइल रख लिया या पेपर्स एक्सचेंज कर लिए बट थिंग इज कि मुझे मसला ये होता है कि हमारी क्लास में इतनी नकम्मी होती थी कि किसी को कुछ खास आता नहीं था यू वर द ओनली वन मोस्टली जिसको आता था एंड यू वर लाइक आई डोंट नो एनीबॉडी तो मैं वैसे ठीक है आई गेट इट दिस इज व्हाट यू वांट दैट्स अ गुड रीजन तो आई थॉट बिकॉज़ यू वांटेड टू बी एन ए स्टार स्टूडेंट एंड यू बी लाइक कि मैं करियर वाइज में इतना फिट होगा सब लोग के जैन काजी काजी विद 4C जीपीए वो किसी को फर्क पड़ा नहीं राइट क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता हाँ वाला नहीं ना बट हमें ये नहीं सिखाया गया था हमें हाँ कहा था एज देने हैं I think डिग्रीज करनी and है I think this is some if anyone who's in the university who's in the college and who's really into this education world get yourself a skill. I think get yourself a skill. I think that will take you a long way because एजुकेशन एक आपको बॉर्डर एक आपको एक बेस लाइन आपको आई थिंक आपको एक बैकग्राउंड दे देती है बट इट डजंट रियली हेल्प यू इन अब आई थिंक being in the corporate world and being having that exposure and in hindsight now being a teacher as well so of course I tend to tell my students कि भाई this is this will help you in the real world this won't help you in the real world but it's good it's good to know it's a little show off here and but there it's unfair कि हमें कोई बताने वाला नहीं था लाइक इवन दो हमारी यूनिवर्सिटीज में काउंसलर्स बैठते थे उन्होंने भी हमेशा से इसी पे फोकस किया कि नहीं आपने ये डिग्री लेनी है आपने किस तरह से ट्रेड्स करने लाइक नोबडी टोल्ड अस कि एंड आई थिंक एलएससी से जो पढ़ा हुआ है आई एम सॉरी अगर एलएससी के कोई लोग या देख रहे हैं बट उसमें कोई स्किल पढ़ाया भी नहीं जाता इट्स अ जनरल एजुकेशन जो हमें दी जाती है जिससे कोई फायदा नहीं हुआ मतलब अगर कोई स्पेसिफिकेशन अगर हम मेरी कोई स्किल हो तो साल हो गए कोई स्किल ही नहीं और बैचलर्स all we did was bullshit and decided now to put it on camera yeah, I've been doing that for so many years. But वही ना हमें जैसे कोई बताया ही नहीं गया था कि आगे आपको स्किल चाहिए होगा rather than डिग्री but having said that I something that I would really give credit to it was the SME thing I don't know the SME thing was something I don't know because I think probably I have a bias to it because because you love the instructor and you love the course. because Laugh Out Lounge started there. Oh yes, yes, all वो था. Yes, Laugh Out Lounge started there. That was the birthplace of Laugh Out Lounge. So I think probably SME. If you're thinking about business and if you're thinking about that, then I think that this is where my soft corners lie. And also, and I think, and I would also give a little credit to the instructor as well, Fizan Khalid. If you're watching, a big shout out to you. So I still remember in MBA. Remember, I told you I met him, and what did he say? No. Well, okay, so I was like I was like roaming around, me, Of course. doing my world tour. What? Our world tour. Our world- Actually, मैं ये कहना चाहती थी कि basically world tour is a mini version of Whine Dine. क्योंकि वैसे तो हमारी कोई औकात थी नहीं असल में किसी वर्ल्ड टूर पर जाने की. Yeah. So any walks that we used to take and complain about stuff, so we used to call it world tour. Very sad. So basically, it was like a whining tour of the whole LSE. So that we used to do. So me being on my own strolling around, so I met Fizan Khalid and he said कि क्या कर रहे हो? And I said कि मैं MBA कर रहा हूँ. His words were इस डब्बे में क्यों बंद हो गए? उस दिन से like first year of my MBA, he said that till the last year of my MBA, I had these words rolling around, and I was totally like uncomfortable the whole time when I was doing my MBA. कि मैं इस डब्बे में बंद हूँ, मैं इस डब्बे में बंद हूँ, मैं इस डब्बे में बंद हूँ. I should do something else. I should do something else.
खैर Yes, वो सी because your attitude in bachelor's and MBA was very different. You also didn't give a shit in MBA हाँ as such. अच्छा अच्छा Second semester mostly. जब हमने एक presentation भी improvise की थी. हाँ और हम निकल गए थे, भाग गए थे बल्कि हम हम लोग क्लास से. इम्प्रोवाइज नहीं की थी, we हाँ, escaped we from that escaped, हमने presentation. skip कर दी. So अच्छा खैर यार उसका रीजन बताऊँ मैं क्या. आई थिंक उसका रीजन ये था कि जब मैंने थोड़ी बहुत जब जॉब की थी 8 months आई वर्क, फिर उसके बाद 8 months के बाद वर्किंग के बाद when we decided to randomly do MBA, Yes. that was random too, like simple खाली हमने मैसेज भेजा था एक दूसरे को कि MBA करने देखो कहते हैं मैं हाँ कर अपनी लो. लाइफ में बोर हो रही थी हाँ और मैं शादी से ही भाग रही थी, so I was like ये had to. शादी से भाग रही थी, मैं शादी की तरफ जा रहा था. हाँ, oh yes. So you thought MBA was also important for your शादी, Yes, yes. and I thought MBA was important, right, to look busy. हाँ. कि मैं बहुत busy हूँ, So इसलिए मैं भी शादी वही नहीं कर आई थिंक peer pressure, MBA कर लो, MBA करने के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी. I was MBA के बाद engaged. आपको इतनी अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आपका स्टेपिंग स्टोन होगा, बहुत जल्दी प्रमोशंस हाँ. मिलेंगी. That stone stepped on me. Yeah, so basically So I think MBA से भी हमें कोई खास, like I don't know, फायदा हुआ. yeah, I don't know. अच्छा अभी I think it's basically because of an objective. I think मैं अगर मैं अपनी personally बात करूँ, I was never the person that would climb the corporate ladder. Even the corporate ladder अगर मुझे हाथ में भी पकड़ा दी जाए, okay चलो corporate ladder में तो हमारा दिमाग खराब है, मैं चढ़ूंगा. Because I never had that motivation to actually climb a corporate ladder. मुझे कभी ये नहीं था कि हाँ मुझे मैनेजर बना दे, मुझे मैनेजर बना दे, भाई मुझे तू सैलरी दे दे, मुझे बस छुट्टी दे दे, बस इतना बस. मैं बस काम करूंगा, छुट्टी लूंगा और मैं दैट्स इट. ठीक है. हाँ, I get that, लेकिन जो भी जॉब करा था उसको ये तो होता है ना कि बेटर पोजीशन हो, बेटर सैलरी हो. I mean, you have work. I mean, up you like rebel and like मैंने जॉब नहीं करनी, and you're doing your own stuff, हाँ which is very nice. So you हाँ did नहीं work a नहीं while. मगर आई डिड वर्क. मैं रेबल वाली बात नहीं कर रहा, मगर इवन व्हेन आई वाज वर्किंग यू सॉ मी. मतलब कि आई वाज नेवर ऑन द फैक्ट कि यार आई वांट टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. आई जस्ट वांट टू बी द एम्प्लॉय दैट सर्वाइव द मंथ. हाँ, लाइक that is true. मतलब आई वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, Which is a good thing, by the way. मतलब कि I worked. It did not mean that I shirked on work, but मतलब I never shirked on work. मगर ये था कि I never worked to create an impact or create an impression of some sort. कि यार ये बंदा है, आई थिंक ये ही हमारी टीम को ये लीड आगे करेगा, जाएगा. ये आगे जाएगा, Yeah. ये बस ये जा रहा है. So Yeah, yeah, I'm going to dine on some this of cake. I'm course. going to try it as well. Please, how is it? Like, Mm, good. chocolate is one of the most comfort food. So Mm. Okay. So, so, so तो इसी वजह से ना there was a constant वही कि यार नहीं कॉर्पोरेट में नहीं, कॉर्पोरेट में नहीं, कॉर्पोरेट में नहीं. और वो फिर उसके बाद ये था कि साइड पे लाख आउट लाउंज शुरू हुआ था. yeah, And wow, we have like a very good coming of sorts. The first laugh out lounge that we did was in Coffee Planet. yes, and this is also in Coffee Planet. Not that Yeah, isn't obvious, yeah. but yes, it was. So hoping ke We have more shows over here. yeah. Maya. So you tell me about your journey, about how do you feel being coming from MBA, doing this corporate job and all of that. What do you think? हाँ देखो हमेशा से I was a very job oriented person. यार देखो मेरा तो सबसे ज्यादा मिक्सअप था कि घर से भागना है, you know, Yeah. like young लड़की who's graduated और उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो क्या करेगी अपनी जिंदगी में. Yeah. So I had to show that I'm doing something. But once I entered the corporate world, corporate world भी क्या, I've always been worked with agencies. एक दफा बीच में एक और कंपनी थी, but खैर I've switched a lot क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. But I have worked and I started, मतलब वो productivity feel होती है, आप कहते हैं you're doing something Hmm. about yourself, और शुरू में feel होता था. But अब ऐसे स्टेज पे हम आ गए हैं कि like I feel like it's a 10 to 6 job Hmm. which you're doing so fucking much for somebody else. मतलब इतनी मेहनत भी कर रहे हो और वो कर भी आप किसी और के लिए रहे हो और आपको एक बेसिक सैलरी मिल जाती है और आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है और फिर आपको दिन बार कुछ घंटे होते हैं, then you sleep and then you do it all over again. And I think you've come to the stage a little later. I came to the stage a little before.
I think that was the difference over here. हो कि सकता है. जिसमें मुझे भी यही लगना शुरू हो गया था यार, because I have understood. I think it's probably true considering the economy and the current conditions that we have. The time is money. We can't really give like 12 hours, 8 hours to one place and just grasp as much as we can from that particular place and be satisfied. मतलब Because कुछ मिल भी नहीं है ना बेसिक. मतलब पाकिस्तान में सैलरीज की वैसी काफी लो परसेंटेज आपको मिलती है कंपेयर टू अदर प्लेसेस. प्लस इतने कोई पर्क्स भी नहीं होते. और हम जब ब्रेमर्स में काम कर रहे थे, आई फील लाइक, ओ नाम बोलना चाहिए था ब्रेमर्स. आई फेल्ट लाइक हम एक एलएसी से निकल के दूसरे एलएसी में आ गए कि इस टाइम पे पहुंचना है, इस टाइम पे निकलना, इतनी ब्रेक्स होनी चाहिए, इधर नहीं बैठ. जैसे एक स्कूल से दूसरे, भाई आपका काम हो रहा है, दैट शुड ओनली मैटर्स. ये नहीं मैटर करना चाहिए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं या किसके साथ बैठे हुए हैं, या कि बड़े हो गए यार, हमें अडल्ट से ट्रीट करोगे तो हम अडल्ट हो गए. So I think सबसे annoying मुझे बात ये लगती है कि there are rules, which is fine, rules are fine, लेकिन एंड पे हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, एंड पे उन्हीं को मिल रहा है. और हम मतलब this is what I also complain about these institutes as well, कि rather than हमें जॉब ट्रेनिंग उन्होंने दी ना, एमटीओ होते थे, वो ट्रेन करते थे जॉब में एप्लीकेशन, उनको हमें ट्रेन करना चाहिए था कि हम खुद अपने लिए क्या कर and सकते I think हैं. I think probably I've mentioned this to you before. मगर वही चीज है कि I agree to that कि मुझे जो MBA सबसे चीज annoy कर रही थी, MBA is like masters in business administration. Where was the business part? There was no business part. There was basically ऐसा लग रहा था कि बहुएं तैयार कर रहे हैं ससुराल में जाने के लिए कि जब आप ससुराल में जाओगे तो बॉस बॉस जब ये कहेगा तो आपने ये नहीं कहना, जब बॉस ये करेगा तो ये नहीं करना, आपने इस तरह से बैठ जाना. इंटरव्यू जब आओगे तो पहले आपने इजाजत लेके बैठने हैं, उसको सलाम करना है, इसको ये करना है, सास बुरा मान देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. हाँ मतलब एमबीए को अगर आप क्रक्स में देखो, अगर ओवरऑल उसको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू में देखो तो यही था. एंड दैट वाज माय अनॉयंस. और उसके पीछे देयर वाज अ रैट रेस गोइंग ऑन. असाइनमेंट देते थे ऐसे कुत्तों की तरह, एक दूसरे के ऊपर पीछे पड़ते थे. हाँ, वो एक किस्म का कंपटीशन था. कंपटीशन हो गया. आई थिंक बैचलर्स में दैट्स व्हाई माय एटीट्यूड चेंज. मतलब कि पागल क्यों हो रहे हो, दिमाग खराब है. सीपीए सीपी करनी है सबसे ज्यादा की क्लास में, सीपी सीपी सीपी. वो तो मैं तो डिफॉल्ट में करता था. और उसका सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन मतलब इट वाज मोर ऑफ एक दूसरे को compete हाँ कर रहे हाँ थे, क्योंकि फिर वो आते थे, कंपनीज आती थी, वो इंटरव्यू देते थे, तो हाँ we had to like secure a position somewhere. हाँ. That was shitty. वैसे हमने ये मिला भी क्या, we did secure places, we got jobs, but अब economy. Yeah. Yeah, I think. But it's fine. मतलब वो होता है एक आपका, when we learn. हाँ But I am a bit jealous from Gen Z people. जैसे कल मैं एक वीडियो भी देख रही थी कि हम मिलेनियल्स ने सब कुछ सीखा. We are also crushing जो हमारे पुरानी जनरेशन के लोगों के आइडियाज और नॉर्म्स और वो थे, और हम उसी एक डिलेमा में, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते हैं वो एक ओल्डर जनरेशन के होते हैं, और फिर उनको, लेकिन जो ट्रेंड है वो नई जगह जा रहा है और हमने उस चीज को शिफ्ट करना है. जो हम we're very stuck. We're studying at it, लेकिन चलो we're trying. और Gen Z इतना फिट, उनको सब कुछ वैसे ही मिल रहा है, because उनके जो सीनियर्स होंगे वो will be like more like millennials ना, तो वो उनके लिए it's more less of a struggle and they know what they want because they have that guidance and that exposure जो हमें नहीं मिला था, which is unfair. हाँ, I understand, and I think even the entertainment industry has changed a lot. And coming to the crux of it, कि whether you can really adapt to it, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि uh, people going towards reel. Everybody has said कि laugh out loud क्यों नहीं reels पे आती, क्यों नहीं stand up comedy उसके videos लगती. The reason is कि the reason मैं तो यही देख सकता हूँ कि जो best reason है, it's not the best reason at all, कि सुस्ती. मेरे पास वो उतना की dedication. I We like are lazy people. we are lazy people. I think और ये भी है कि I think probably यही है कि अगर I like this high on the stage so much. मैं ये नहीं, मुझे होता है कि अगर ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने वीडियोस अगर अपलोड करना शुरू कर दी, पीपल लोगों के स्टेज वगैरह बदम पढ़ना शुरू हो गया, लोगों की कंटेंट लोग देखना शुरू हो गए, they won't feel the same high that they get, that organic high that they get When from they're when they're in the show. But again, यही है कि I am trying to
work over those fears and so yeah. पर हाँ रील्स बनाना जरूरी है, अभी ट्रेंडिंग है, हमने डिजिटल में अगर काम करना है तो जो भी ट्रेंड है उसके साथ तो वी हैव टू डू दैट स्टफ, दैट्स इम्पोर्टेंट। Talking about reels, you're wearing yellow out of all the colors that you could wear. You don't wear yellow. मगर आज तो तुम looking like a wow, like so elegant, so So beautiful. beautiful, लड्डू looking like a wow. लड्डू पीला कलर. यार देखो मेरे थेरेपिस्ट ने कहा था अच्छा अपनी लाइफ में कलर्स देखते हैं, so maybe your attitude will change. अच्छा. No, maybe my attitude will change. I don't think so. She's wearing yellow and with an underline of black. अपनी ओरिजिनलिटी तो नहीं यूज करनी ना। पर आफ्टर MBA एंड आफ्टर हम लोग ने चलो जॉब्स की एंड रियल लाइफ में, सो अब जितना लाइक नाउ यू वेयर यू आर, और अब हम कुछ साल पहले देखते हैं जिसमें वाइनिंग एंड शिट करते थे कि ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा, माशाल्लाह यू हैव योर ओन वर्क नाउ, you're famous, you're the stand-up comedian, you're famous, like जैन काजी का काफी नाम है। That's pretty humbling from your side. But and then you also married, Yeah. and so this is how you pictured your life. And this is like you satisfied और कितना सामने कर मतलब इसी तरह से। यार देखो खैर अल्हम्दुलिल्लाह this is an attitude that I have कि I'm कि जो भी है कि whatever you know me कि ये कि I have like a chronic optimism कि I try So to find annoying वैसे, that is so fucking annoying I- because हमारी दोस्ती में प्रॉब्लम ये है कि मैं नहायत ही नेगेटिव नहायत ही पॉजिटिव इंसान है, oh my god. तो नहीं, I think attitude also affects हाँ your मगर life. यही है कि अगर आप कहो कि did you want your अगर according to my plan did I want my life to be exactly the way um, but I think I'm going towards it right now. I'm not exactly there, ठीक है क्योंकि वही था कि पहले जब तक मैं जॉब कर रहा था, जब तक मैं काम कर रहा था, मुझे लग रहा था कि I'm not going there. मुझे लग रहा था कि I'm stuck in a loop. इसकी वजह से मुझे भी डिप्रेशन का काफी शिकार मैं रहा हूँ और काफी और कि मैं मेरी डिप्रेशन आई टेक आउट डिप्रेशन इन अनदर वे, बिल्कुल ही एनिमेटेड हो जाता हूँ कि everything is fine and actually I'm dying from the inside. You start acting very hysterical and you started, and an annoying part, funny part was because in Bramil you were my friend as well. तो जब तुम weird हरकतें करते सब मुझे शेयर कर रहे होते थे और मेरी मैं क्या करूँ, उसका रिस्पॉन्स है तो हम चाय पीने चले जाते ना एंड मजे की बात ये है कि आई थिंक some of the people अब सलमान big shout out to you again. अब जैसे कुछ लोग थे started understanding कि यार अब काजी गुस्से में आ गया क्योंकि गुस्सा मेरा everybody knew कि मैं aggression, so I'm known for my aggression. So नहीं, but like I've seen कि पहले you were very calm, but I think life does change you a bit और आप तुम थोड़े से aggressive हो जाते हो, which is fine because there's a lot of frustrations as well. तो वो इतना issue नहीं। अब मुझे से सबसे ज़्यादा frustration होती है like everybody is leaving Pakistan. I don't know if you are planning or not. नहीं, not quite अभी तक। क्यों? देखो सारे मुझे कह रहे हैं हमें वो नहीं करना होता जो हमें कह रहे हो। वो वाला फैक्ट है। कभी ऐसा हुआ कि आप ना बाल कटवाने जा रहे हो, अच्छा अब जैसे मेरे साथ होता है कि बाल कटवाने में जा रहा होता हूँ, लिटरली मैं बाल कटवाने जा रहा होता हूँ, अम्मी एकदम से कह देती है कि सहन बाल कटवाओ, एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट में चाबी वापस रख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं बाल कल कटवाऊंगा जस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट। या ये थोड़ी सी हमारी अनोइंग लगते थे, अभी हमें कुछ कहते तो हम नहीं करते। हाँ it's just weird मगर बट ठीक है आई थिंक। मगर यार बताऊँ क्या है कि I don't know again the chronic optimism. I think this country has some potential. It's like probably if everyone goes away, you really then you will rule Pakistan. I will rule Pakistan basically with 5 people in this country. यार मुझे कोई मसला नहीं है, अगर मुझे भी जब कहते थे तो आई वाज आल्सो लाइक ठीक है इकोनॉमी मसला हो रहा है या चीजों को मैं प्रॉब्लम है या जो भी पॉलिटिक्स है, बट मेरी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं होता था तो मैं इतना नहीं कहती थी। I think if I say Pakistan is now like a bad movie, it's like a bad movie. आप देख रहे हो, कभी आपने बुरी मूवी देखी है और आप कहते हो कि यार कि कभी कितनी बुरी हो सकती है, जैसे कि वो भी मूवी आएगी आर्ची। ओह वो मैंने सब इसलिए देखी हुई थी, लोग कह रहे हैं बहुत बुरी मूवी। भाई मैंने देख ली है, ओह मैंने देख ली है, मैं इस वजह से मैं कह रहा हूँ
it was a homage of how not to act. यार उसकी तो teasers So भी so था. I can let's I'll show you a little glimpse of what Archie is. Of course. Okay, so this is Sohana Khan, I think probably Sohana Khan. Okay, I am drinking coffee. Sumbal, I'm sorry ना. क्या कर रहे हो यार? क्यों? Cake. Let me have cake. Yeah, I think they were acting for the. Sir, I think इसमें आर्टिस्ट नहीं देखूँ आपको देखते. सच ही था मूवी. Also, I roller skate. They Oh were no, acting for the Pakistan is in first. danger. They're acting for the first time. They were now the problem is now they were trying to hype up the thing that they try to hype up it so much. I have you read Archie's? Yes. You've read Archie's? Archie's has like that slapstick nature to it. Yeah. That was not totally imbibed into it. I think that was my first pet peeve, and the No good. second second pet peeve being that they were not acting at all. They were not Okay. trying to act. I know the choreography, the overall look of the set, and everything was spot on. It felt really good. But nobody really captured the essence of any character. I They- think वो सब hot बनने की कोशिश कर रहे थे. और why was Archie so hot? मतलब Yeah, Archie because Archie Veronica and वो बस hot सी आई थी ना, उन्होंने इमेज बनाया था पर्सनालिटी उसकी, तो वो बस उस चीज को. Archie मगर Archie वो कभी भी hot नहीं था ना. Archie तो आर्ची नहीं था, वो जो babes थी वो तो hot. तो आई थिंक वो बनने की कोशिश कर रहे. आई नो मैंने मूवी देखी नहीं है, तो बकवास है. लेकिन माय पॉइंट वाज कि जो पाकिस्तान के अभी जो मुझे मसला लगता है या जो आई रियली कंप्लेन अबाउट इज कि लड़कियों की कोई खास लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू लिव हियर if they're not married or if they're not with their parents. I think और if they're being pressurized towards marriage, I think or even in jobs like last अभी भी लास्ट वीक मुझे इतनी तब चढ़ी लाइक दिस क्लाइंट who I've been working with, ठीक है, और मैं उनका सब कुछ हैंडल कर. और लेकिन जब फाइनेंशियल्स की बारी आई और पेमेंट क्लियर करने की, तो आगे से कहते हैं कि आई वुड रेदर डिस्कस फाइनेंशियल्स विद सम मेल इन योर कंपनी. व्हाट इज दैट? Jennifer, I would rather give all of your work to some male rather than doing it myself. मतलब और मैं बस देख रही हूँ कि यार ये क्या है, ये क्या फीमेल्स फाइनेंशियल्स भी हैंडल कर सकती. आपका सब कुछ तो वो हैंडल कर रही है. यू डोंट हैव अ कॉमन सेंस टू इवन नो व्हाट सोशल मीडिया एवरी इंस्टेंट एड्स आर. पर जो फाइनेंशियल्स हैं वो लड़की नहीं. तुम्हें नहीं देखना आता. तो आपको मुझे नहीं भी देखने आता, तो उसको तो भी पता ना कि मुझे नहीं देखना आता. देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफी जगह होती है. मैं लाइक जिस मार्केट में हम होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं ना, रियली हर बंदा मुझे कहता है क्या मेरी कोल्ड और but I do that because when nobody takes you seriously, at least nobody takes a girl seriously in working things. तो फिर उनको बस एक अगर लड़की ज्यादा बोल रही है तो वो फ्रस्ट्रेटेड. उसकी लाइफ में तो सिंगल है, शादी नहीं हुई अभी तक, इसलिए ऐसे बोलती है. दिस इज द माइंडसेट दैट मैं कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाती, लेकिन अब मुझे होता है कि यार निकलो यहाँ से, बिकॉज ये आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते. मतलब माइंडसेट तो मगर वो तो है ना कि तुमने काफी बट हाँ आई थिंक शादी वाइज तो आई थिंक मेड lot of efforts to go across the finish line, but finish line को क्रॉस करते करते तुम कहती है no. तो देखो वो एक Let's talk about that. No, let's not talk about It's time for the true Whine Dine. No, let's not talk about that because So simple. yeah, देखो, I think any girl who's watching and who's at my age, should I tell my age? Like, I'm gonna turn 29 next week. My birthday is coming up, just by the way, if you don't remember. Yeah, you see, you didn't remember. And who's independent and earning for herself, और वो किसी पे rely नहीं कर रही,
लेकिन अगर वो सिंगल है और उसकी शादी नहीं हुई थी तो दैट्स अ बिग राइट। क्या ऐसा कि बसता है उसमें से? इतनी बड़ी ट्रेजेडी कि हम्म आपकी एक बेटी है और उसकी शादी नहीं हुई। हम्म और this thing I've been living with is for so many years. हम्म Not even just this year कि मैं अभी 29 की हो रही हूँ. Like I think the moment I आई थिंक graduated बैचलर्स के थर्ड फोर्थ ईयर से शुरू से हो जाता आगे शुरू हो जाता है क्योंकि लड़की की एक एज होती है जिसमें आपने शादी मतलब ठीक है if people meet somebody and they have the compatibility और वो शादी करना चाहते that's great. है। मतलब आई नॉट हैव नथिंग अगेंस्ट इट बट एक टाइम था जब मैं भी फैंटेसाइज करती थी अपनी लेकिन जो कि इतना डाला जाता है आपके ऊपर ये करनी है करनी है करनी है, करनी है, तो आप मतलब मैं तो चढ़ जाती हूँ भाई अब जैसे जैसे उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान से बाहर जाओ 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 और तो बिक जाओ तो मेरा भी शादी करो शादी अब तो मैं नहीं करूँ क्यों कहा क्यों आप तो बस खत्म। हम्म आई मीन यूर मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लव मैरिज है तो आपकी बहुत अच्छी जा रही है ना एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्ट्रगल्स एंड दैट्स फाइन वो एक अलग बात है बट एक तो ये फर्ज नहीं नॉट आई एम नॉट सेइंग कि मैंने नहीं करनी बट कंट्रोवर्सी। इस्लाम में भी अगर देखा जाए तो फर्ज नहीं है ये चीज करना हाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्होंने अपनी बेटियों को करना होता है दैट्स फाइन लेकिन अगर नहीं चीज हो रही तो सोसाइटी उन पेरेंट्स को भी इतना प्रेशराइज करती है कि उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता है शादी होती है फिर क्या करो बच्चों एक बच्चा मतलब आई थिंक यू कैन ऑल्सो Yeah, रिलेट टू yeah, दैट yeah. Oh my और God. हम क्या दूसरों के लिए शादी और बच्चे कर रहे हैं यार I think it's probably यार अब ये देखो आई एम नो वन टू कमेंट क्योंकि आई डोंट हैव द और किसी को कमेंट करना भी नहीं चाहिए कि ये फर्ज है या नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में मगर यार ये जरूर है कि मगर आई थिंक ये है कि आई थिंक marriage is something like अगर if you find someone यार you feel कि यार there's a compatibility to it and यार आप लाइफ गुजार सकते हो तो फिर करो। I mean, it's a beautiful partnership. हाँ If you take it in that way. हाँ If you take it in a जबरदस्ती way कि नहीं करनी है, no matter भाई आपको ये अगर आपका ये रिक्वायरमेंट होगी है ना कि लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए बस नफ्स चलनी चाहिए that is where you have to recalibrate re recalculate बस सर मिनिमम रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए जो पार्ट्स हैं वो चलते रहे हो सांस लेता हो एंड दैट्स गुड आई विल मैरी। वैसे वो भी जरूरी है लेकिन नहीं इट्स नॉट दैट यार जहाँ तक मुझे लगता है कि पार्टनरशिप फ्रेंडशिप वो होनी चाहिए लेकिन लोग क्या ये जो हमारी क्या निकाह हो जाएगा अल्लाह ने दोस्ती तुम्हारे and then you will feel whatever you want ये कौन अच्छा ओके होगा अच्छा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि निकाह जब हो रहा होता है ना जब आपका निकाह हो जाता है the feeling is pretty powerful मैं you know the person you guys हाँ already have हाँ नहीं मगर ये नहीं है कि जैसे निकाह होता ही मैं एकदम से no उसके मैं ऊपर वही कह उसके ऊपर छलांग मार के आई स्टार्टेड मेकिंग आउट विद हर या समथिंग लाइक दैट कोई ऐसा हो जाता है कि एकदम से आपको अर्ज हो जाती है ला 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 मुझे शायरी आ गई है चलो जी लो पढ़ो ऐसे थोड़े आता है मतलब ये होता है कि एक हाँ कि एकदम से जैसे बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब ये तो stop नहीं ये this is I'm giving you the juicy part this is the juicy part of the wine and dine experience यार मैं नहीं मगर मैं ये कह रहा था कि जब आपका निकाह हो जाता है ना जब निकाह हो जाता है एक sense of responsibility just befalls on yeah आती भी है हाँ लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप हर जगह अप्लाई नहीं करते वो फिर अब मुझे मतलब मसला नहीं मुझे बात नहीं मुझे फाइंड हैप्पीनेस अवार्ड एवरीबॉडी एडजस्ट बात है एंड एवरीबॉडी वर्क्स टू मेक हाँ दैट यू कैन नॉट से कि इसकी वजह से आप मगर मैं बताऊं just being the devil's advocate एक और भी याद आता है just taking sides of the opposition I know I use that word okay my brother hates that as well मगर Hasan what's up so basically क्या है कि अब होता ही है कि जब आपकी अरेंज हो जाती है
तो आई थिंक वो जो होता है ना गेट टू नो ईच अदर वाला पार्ट और गेट टू नोइंग ईच अदर वाला पार्ट और जब कॉन्वर्सेशन आर इंटरेस्टिंग कि जब आप एक दूसरे से इनिशियल कॉन्वर्सेशन जो इंटरेस्टिंग होती है जिससे आपको यूजली स्पार्क अपना फ्लाई करना शुरू कर जाते हैं बटरफ्लाई होना शुरू हो जाती है वो आई थिंक आप आफ्टर मैरिज अगर आप करो एंड इफ यू डोंट नो दैट पर्सन एंड यू रियली कनेक्ट विद हिम और आप बात करना शुरू कर दो एंड यू नो वो वाकई में ही इज वेरी गुड एट कनेक्टिंग विद यू तो इट्स नथिंग लाइक इट ठीक है मगर आई थिंक इट्स ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ गैम्बल और हाँ और ये है कि यार देखो शादी के बाद वो जो होता है ना कि कुछ तो अभी कुछ बेबीज होंगे जो बैठ के बात करे होंगे एक दूसरे से कि तुम शादी के बाद बदलोगे तो नहीं यार डूड आप बदले थे huh? Everybody changes, bro. Everybody changes, and it's not because कि तुम अब बदल गए हो तुम अब बदल गए हो नहीं बदल नहीं आप बदलते इस वजह से बिकॉज ऑफ सिचुएशन बिकॉज आपको एकदम से when you understand that now I have a family to run आप अपने फाइनेंशियल्स दूसरी दूसरी तरीके से देखना शुरू कर देते हो एक चीज जो सबसे ज्यादा जो मेल को जो फ्रॉम आवर साइड हम लोगों ने अपने आप को अडेप्ट करना होता है इज बीइंग ओके विद एक्सपेंसेस ठीक है एक पर्टिकुलर पॉइंट आया था कि जहाँ पर ना एक्सपेंसेस लेफ्ट राइट निकलते थे और मैं क्रैंकी हो जाता था मैं क्रैंकी हो जाता था मामा बाबा कहते थे कि अंडे दूध डबल रोटी लेकर आओ क्यों आप अंडे डबल रोटी इतना ज्यादा क्यों खा रहे हैं आजकल एंड लाइक भाई क्या हो गया इजी हो जाओ ठीक है तो इस वजह से और इससे आपको थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ता है कि यू हैव टू बी ओके विद डेट ठीक है क्योंकि जब अपनी सिंगल लाइफ होती है आपके पास सरप्लस होता है एंड यू लविंग दैट सरप्लस आप इधर जा सकते हो आप यू कैन इन्वेस्ट यू कैन बाय समथिंग दैट यू रियली वांट ठीक है और वो चीज जो है ना थोड़ी सी खत्म होती है आपके एंड से फॉर द मेल साइड ओके और फिर उसके बाद ये होता है कि जो भी आप कमा रहे होते हो यू हैव टू गिव अ सर्टेन परसेंटेज टू योर वाइफ एज वेल उसके उसके खर्चे देने होते हैं हाँ तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको तो यही हुआ ना कि जब शुरू में जब सैलरी मिलती थी मुझे वो कहती थी कि मुझे भी तो ऐसा मैं कहा मैं क्यों तुम खुद काम करके हो हाँ क्योंकि आपको हाँ यही होता हाँ बस साले तू अपना पैसा दे मगर ये चीज नहीं होती ये चीज नहीं होती और आई थिंक ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये चीजें एवरीवन हैव टू इनकलकेट और आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल फॉर योर फॉर एनीबडी हु इज गेटिंग मैरिड इनटू उसको ये माइंडसेट पहले से दे दो ताकि ही इज प्रिपेयर्ड अक्सर हमें ये होता है हमें ये होता है कि दोनों साइडों को ना इवन द फीमेल साइड इवन द मेल साइड दोनों को जो है ना गने पकड़ा के जो है ना छोड़ देते हैं कि हाँ गने आई मीन इन अ वेरी क्लीन सेंस Yeah, that's what's very nice. You had a sense of responsibility and तुम financially भी उनको अपनी वाइफ को दे देते हैं that's good but जहाँ तक I see around is that male and female both are working एक तो ऐसी situation है नहीं कि आप घर बैठ के आप मियाँ कमाएं और आप घर वो तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते सेकेंड आई थिंक लड़कियाँ भी इतनी प्रोग्रेस हो गई और आगे से स्कूलिंग को मिल गया और एजुकेटेड दे ऑल्सो वांट टू वर्क एंड दे वर्क फॉर themselves for their partner for their families तो आई थिंक फाइनेंशियल वाली चीज़ तो दोनों की तरफ से होगी ना क्योंकि दोनों कर रहे हैं हाँ मगर फिर then there's this rule तो मैंने भी लाइक लेट नाइट 2 AM कॉल्स में जब मैं मेरे को मेरी गर्ल वो मेरी वाइफ है तो वो मैंने उसमें ये प्रॉमिस कर दिया था कि माय मनी इज माय मनी एंड माय मनी वो कि उसकी साइड से माय मनी इज माय मनी योर मनी इज माय मनी आई वाज अच्छा ये होता है तो actually. फिर That ऐसा होता है it's because of 2 AM horniness I said I said yes baby और whatever. आज आ रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ मगर हाँ ये पकड़ी से चाह कि आपको एटलीस्ट मगर फिर भी आपको करना एंड आई थिंक ये क्योंकि ये उसके राइट्स में से आता है ठीक है अब अच्छा एक और चीज़ जो आई थिंक stop off now this is going to be like controversial Controversial बातें करनी नहीं. controversial बात अच्छा controversial अच्छा मुफ्ती मैं I totally love him I absolutely love him I this is deep he like in terms of religious
In lightning he is amazing. मगर in fights he is like the source. अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई फाइट होती है तो ये बेसिकली जो होती है ना कि मुस्लिम जो वाइफ वाले राइट्स वाले जो है ना वो सारे जो है ना रील्स निकालना शुरू कर देती है और वहीं से मुझे चिढ़ना शुरू कर देती है. इट इज सुभान अल्लाह, इट इज रिटन इन द, मतलब कि आप जैसी देखते हो, आप सीन देखते हो तो कहते हो भाई मैं तो सीधा जानू, मैं आई एम गोइंग स्ट्रेट जानू. तो समटाइम्स दिस इज वेरी मगर आई थिंक दिस इज लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ मैरिज के जब बैक एंड फोर्थ होता है. मैरिज इज वेरी एक्साइटिंग, इट्स लाइक स्काई डाइविंग विदाउट अ पैराशूट. सो सो या. Okay, let's say because everybody calls you a person who already that aside. What's the worst thing about marriage? What's the worst thing about marriage? यार worst thing about marriage, worst thing about marriage ये है कि अगर अगर कोई lack of respect has been shown by some party, either of you, like by the husband or the wife, it sticks to you. It sticks to you, and it hurts you little more. ठीक है, अगर आपका बॉय आपका दिल दुखाता है ना, आप उसको थोड़ी देर कहोगे खड़ूस है बात करी, और फिर उसके बाद वो जो है फिर आप एक दूसरे को कहोगे आई यू कूल विद इट, यू टेंड टू मूव ऑन. बट मूविंग ऑन with that particular part, और फिर उसके बाद you have to be like okay with it at a certain point. That healing process takes a lot of time. फिर उसके बाद आप And that's a compromise. that this is where the test really comes. And I think और अनफॉर्चुनेट की बात है या फॉर्चुनेट की बात है, this is a particular test that will be tested by anyone getting married. This is like the rite of passage. अगर आपने वो क्रॉस कर गए, अगर आप वो बर्दाश्त कर गए, या वो let's say for example you would do it, and I think that is where marriage is then tend to have that longevity. वरना you won't have that longevity at all. So Such wise words. yeah, such wise words. I just really went deep into that. Please ask me something non-serious. Ask me something non-serious. मैं बहुत deep water में चला गया हूँ. मैं नहीं, you have to leave those things. Have time. मेरे को वापस लाओ. नहीं, but that's really nice. हाँ. What you said. हाँ. Obviously, होता होगा. हाँ. I don't know. It's like experience, but हाँ I'm sure there's a lot of compromise, and you were just like that's what I. हाँ 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 हाँ. और yeah, और I think यही चीज़ probably आपकी differentiate करती है. बाकी yeah, it's just too weird. It's good, and I think having a different kind of paths across the way, and or specifically, I think I would give credit to my wife. इसमें तो यही है कि जो भी मैंने jump मारी है from not having a stable income towards going towards business, going towards laugh out now. She was pretty optimistic about it. Deep down, मैं बड़े डर के बस बताया था उसको मैंने कि जॉब छोड़ने लगा हूँ. Obviously, reality का एक होता है factor. हाँ, हालांकि उसने अच्छा सम क्रेडिट एंड सम वही वो वाला होता है कि उसने शुरू में तो दिखाया मुझे कि यार नहीं कर लो. अच्छा जब मैंने कहा कि हाँ मैं करने लगा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा, तो मतलब मेरा क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब मैं तुम्हें थोड़े छोड़ो, जॉब छोड़ो, अजीब पागल. It's the same thing. हाँ तो It is supportive, but that's good. हाँ ये supportive. बाकी हाँ you mentioned that वो जो ये होता है कि शादी कैसे कर ली, शादी के बाद चाइल्ड वाली चीज, that is another nightmare. अगर सबके रिश्तेदारों को क्या चाहिए, तो मतलब रिश्तेदारों को क्या प्रॉब्लम, हाँ उनको आप मतलब आपको बच्चा पालना. हाँ Why do they always ask this question? I don't get it. आप कहीं लोग ना आंसर. अच्छा रिश्तेदार तो चलो ठीक है, मगर आप अगर मौलवी साहब अगर आपने पूछा कि रोज काफी awkward हो जाता है. मैं बात पढ़ना छोड़ दी थी मैंने सीधा से, क्योंकि वो एकदम और जी मिठाई कब खिला रहे हो, मैं कहा भाई सारे मैं तुझे मिठाई खिला दूंगा.
ये जवाब ये सवाल मेरे से पूछने मन करते नहीं मगर नहीं he's a very nice guy alhamdulillah I don't know why do people ask Do you have you figured this out? यार बस I It's don't not a know personal one. हाँ पर्सनल बात है मगर मगर पर्सनल स्पेस की तो कोई हमारे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना मतलब वही है कि तो it's basically they just want to know कि whether you're doing it so like हाँ so I just have are you satisfied because we see no result so if we don't see any proof that you're actually doing it so I think there's a concept to it I think video yourself doing it next time listen to me this is like a short तरीका this came just right to me on Whine Dine you make a video of yourself showing it ठीक है तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे कि अभी तक हुआ नहीं ट्राई कर लें आप दुआ कीजिएगा he will be traumatized but guess what he will never ask but then there were some pervert people as well that is a very good and then again this is still a win-win situation if that person is a pervert you can really fish out the perverts out of your family I think इसी नोट पे हमने Whine Dine को थोड़ा सा एंडिंग पे लगा ये कॉन्वर्सेशन पता नहीं कहाँ जा रही है and I don't want to know if you've already done that before. No, I've not done that. Dude. No! Okay. Thank you, Saint Kazi, for taking the time out and for being on my first episode. Absolutely, it was a pleasure. And it's always fun talking to you. Absolutely. Even though you always talk against me or counter arguments होती हैं. But अगर मेरी सारी बाइंग की मेरा साथ नहीं देते. But thank you for coming. And good luck for the rapper now. Absolutely, And absolutely. hopefully you'll be back for more episodes. Inshallah. I'll be well I think I'll be coming back because I had fun this was fun having a coffee Oh, latte it is fun. so, perfect And free there. do you want me to do the closing Of course, you're the host. I'm the ghost the guest and the host Yeah. okay so this is it for Whine Dine inshallah do like subscribe where are we putting this on we're putting this on YouTube yes we're putting this on YouTube so like subscribe follow share so we can get viral and probably earn some money into that but before that this is just a Whine Dine we just love to do what we do alright so toodles